हाय गाइस, वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज क्लास। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि मैंने खुद जनरेट किया, मैंने खुद बनाया है फॉर मेंस एंड एडवांस के लिए। दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोशन ऑन ऑब्जेक्ट ऑन डायनेमिक फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ब्लॉक हैं जो कि एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं and these are released at same time and having different friction for different block. So problem is that one block has to touch another block, and that time, what will be time in which a one block will touch another block, that we have to find out. So let us define the problem first, and such kind of problem I will prepare and discuss before you, so that you will get new problems which were never asked in the JEE Mains and Advanced and not given in any competitive books. So that kind of problems will generate confidence बढ़ाएंगे, and we will be able to create new problems. So first here let us define the problem and then we will solve it. Like JEE Mains problem, you will get multiple option type answer and you have to choose correct answer. So let us define this problem first. Here question is that two blocks A and B, two blocks A and B of mass 5 kg and 10 kg or at 5 मीटर अपार्ट, मतलब कि 5 मीटर एक दूसरे से दूर रखे हुए इंक्लाइंड प्लेन में, ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट 60 डिग्री, both are released at t equal to 0 second means at same time. If friction of block A, if friction factor of block A is 0.3 and B is 0.2 and if SA and SB are distances covered at time when one block touch another block. So find इसमें ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन गिवन है ए, t इक्वल टू 2 into root 5, t equal to 2 into root 5 and SA equal to 5 plus SB. ऑप्शन बी गिवन है t equal to 5 into root 2 and SB equal to 5 plus SA. ऑप्शन सी t equal to 2 into root 5 and SB equal to SA plus 5 and D equal to, in option D, t equal to 5 into root 2 and SA equal to SB. This is a problem defined. Here out of 4 options you have to this t in time second, and SA and SB are distances covered by both block A and B, and 5 is a distance between two blocks which start their motion at t equal to 0 at the same time. So initial distance between two blocks is 5 meters. So how much time required for block B? Actually friction factor for block B is less, so more acceleration will be for block B. So suddenly it will catch block A. So out of these 4 options you have to choose second option. If you get time t, then you also get distance equation.
So first we have to define a block, how these blocks are put. So let us define here in diagram, and next we will draw another diagram. So this is a diagram. So this is a diagram. These are two blocks, block A and block B. This angle is given 60 degree, and mass of this block is, this is block A and this is a block B, and the mass of this block is 10 kg and this one is 5 kg, and friction factor between block A and this surface 0.3 and 0.2. So suppose mu for A for block A 0.3 and mu B for block B is 0.2. So this is the problem, and distance between these two blocks is 5 meter. Distance between these two blocks is 5 meter. So this is a problem, and once at t equal 0, both will start their journey. Both will start moving. So block B actually move faster than block A, because the friction factor is 0.25 block B, 0.35 more resistance offered by surface for block A, so lesser acceleration and block B will have. So let us calculate, we just make a equation, the free body diagram of block A and block B, and then calculate accelerations of block A and block B. Then we find out time period in which block B will catch block A. So from this given equation, from this given data, you can easily understand that block B will move faster than block A if there is enough distance. Length of inclined plane is infinite. Length of inclined plane is infinite, so that it will not go down to this horizontal surface. So here we have to make equation, and then we solve for the time period, in which time period block B will catch block A. So now let us start with another equation. Let us new screen and draw another diagram. So draw another diagram with detailed free body diagram. So this is a block A. Let us change the color. This is a block A, 5 kg, and consider G equal to, we have not given G equal to 10 meter per second square. I am taking G, either G will be given or you have to take G equal to 9.81 meter per second square. In many times स्टूडेंट इन हैश जल्दबाजी में क्या करते हैं, जो गिवन जी वैल्यू नहीं लेते, 9.81 लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो फर्स्ट रीड केयरफुली इक्वेशन whether g is given or not. If given, then use only given value, because most of the time simplicity के लिए ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े तो g स्टेट पावर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दे देते हैं जे मेंस में एडवांस. तो हमने ये ए ब्लॉक लिया है एंड दिस इज ए ब्लॉक बी. इसका ब्लॉक बी का जो हमने वेट लिया था ये 10 kg है. दिस इज 10 kg. तो यहाँ पर जो मास होगा 10 इंटू जी, यहाँ होगा 5 into G. This angle is 60 degree, and this length is not limited. Length you can extend up to long time, because ultimately block B को block A को कैच करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो म्यू दिया. अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगा R का, एक रिएक्शन तो इसे नीचे की तरफ ले जाएगा इसका mg. ये एंगल कितना 50. So this angle is also this, you can find out angle. This is 50, so this is 60, and this one will also 30. So this equation, this length है, this equation will be mg. जो फोर्स यहाँ पर काम करेगा mg sin 60, because and this one here reaction of the surface RA. Reaction of surface on block A will be RA. This is the weight of the block mg, and this one equal to mg cos alpha. This alpha is 50 degrees, so 5 into g cos 60 degree. This is 30, so this will be equal to 60 degree, because this angle 50
90, 30, and this one again becomes 60. So this mg cos alpha and mg sin alpha, mg sin alpha, mg sin 60 and mg cos 50. एंड यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, वो होगा म्यू इंटू आर ए, एंड आर ए इक्वल टू कितना होगा, आर ए इक्वल टू 5g cos 60 डिग्री। तो टेकिंग ए बैलेंस ऑफ इक्वेशन, अब यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा ये डाउनवर्ड गिरेगा, तो mg sin अल्फा हैज टेंडेंसी, इसकी जो टेंडेंसी होगी इसको खींचने की होगी, और म्यू आर ए जो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जो इसके मोशन को अपोज करेगा वो इसको ऊपर तरफ खींचेगा, बट mg sin 60 ग्रेटर देन अगर म्यू आर ए से होगा तो दिस विल मूव अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। सो टेकिंग ए बैलेंस ऑफ इक्वेशन mg sin 60 minus mu r a equal to mass into acceleration of body A, and putting value of this 5 into 10 sin 60, 5 into 10 into sin 60 minus 0.3 mu A is given 0.3. RA means mg 5 into 10 into cos 60 equal to 5 into A into A. So here 5 is common, 5 you can remove and take 10 common, sin 60 minus 0.3 into cos 60 equal to A into A. Solving, putting these values, 10 root 3 by 2 minus 0.3 into 1 by 2 equal to A into A. Acceleration of block A, and take a 1 by 2 outside, 1.732 minus 0.3 equal to A into A. Solving this equation, A acceleration of body A equal to 5 into 1.432 equal to 7.16 meter per second square. So acceleration of block A is 7.16 meter per second square. So putting this value, taking value this acceleration value here, A into A equal to 7.16 meter per second square. So removing this one and solving for second one. Same thing apply for finding out acceleration of the block B. Block B will also move along this direction. mg sin alpha and mu b rb. This is the equation rb, and here 10 g cos 50, angular remains same, 10g cos 50. So applying equation for second block B, same equation you apply for block B, but mass and friction are changed. So applying this equation, motion of for block B, mg sin alpha will try to pull along inclined plane, and mu rb जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो बैलेंस फोर्स होगा दैट विल क्रिएट एक्सेलरेशन टू ब्लॉक बी, एंड ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इट विल मूव टुवर्ड द inclined toward the block A. So applying this equation, mg, writing same equation, mg sin alpha minus mu rb equal to mass into acceleration of block B. But here mass is given, mass you can replace. Again writing equation, mg sin 50 minus mu b rb means mg cos 60 minus equal to m into a into b. So m you can replace here. There is no any role of m in acceleration. In this equation you can say m is whether less or more. M has no impact on acceleration of blocks. So take g common, sin 60 minus mu e. Here mu change 0.2 cos 50
equal to A acceleration of block B. G already we have taken 10 sin 50 root 3 by 2 root 3 by 2 root 3 by 2 minus 0.2 into cos 50 1 by 2 equal to acceleration of B. अगेन यू कैन टेक आउट 5 बचेगा 2 से डिवाइड कर देंगे 1.732 माइनस 0.2 इक्वल टू ए एक्सेलरेशन ऑफ बी. सो 5 into 1.532 7.6 meter per second square. Acceleration of B is it is obvious that because friction factor for block B is less than friction factor of block A, तो इट इज ऑब्वियस, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसका फ्रिक्शन, इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है कम लग रहा है, इसलिए दैट विल एक्सेलरेट मोर कंपेयर टू ब्लॉक ए. So acceleration of B is 7.66 meter per second square. Now we have to find out how much time, because already we know that कि ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन ब्लॉक ए से ज्यादा है, तो इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लेगा ये जो ब्लॉक ए की तुलना में, तो इसको ज्यादा चलना पड़ेगा, 5 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा कंपेयर टू ब्लॉक ए. सो टाइम कितना लगेगा इसको ये डिस्टेंस कवर करने में, एक्स्ट्रा 5 मीटर प्लस टाइम टी में कितना कवर करेगा डिस्टेंस, हाउ मच टाइम, हाउ मच डिस्टेंस बोथ ब्लॉक विल कवर in time t, so that block B will catch block A. ब्लॉक A को पकड़ने के लिए इसको तेज चलना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि t टाइम इंटरवल में कैच कर लेगा. सो लेट अस सी दैट t टाइम आपको निकालना है. दोनों ब्लॉक के डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे. एस बी ब्लॉक बी के द्वारा जिस डिस्टेंस की कवर होगी वो 5 मीटर ज्यादा होगी कंपेयर टू ब्लॉक ए एस ए. अब दोनों की जो डिस्टेंस होगी, इक्वेशन कौन सा लगेगा यहाँ पर, ut प्लस एफ इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इक्वेशन यू कैन अप्लाई. एफ इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी नो दैट बोथ आर स्टार्टिंग एट t इक्वल 0. बोथ आर स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए इक्वेशन क्या होगा, ut 0 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ इसके लिए, बी के लिए 7.66 टी स्क्वायर इक्वल टू 5. अब ये 5 ज्यादा तय करना पड़ेगा डिस्टेंस ए की तुलना में, अदरवाइज कैच नहीं कर पाएगा. इट हैज टू कवर 5 मीटर मोर डिस्टेंस कंपेयर टू ए. 0 इंटू टी प्लस हाफ ए बी कितना दिया हुआ 7.16 इंटू टी स्क्वायर. सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज 0, सो 3.83 टी स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3.58 टी स्क्वायर. So 3.83 t square minus 3.58 t square equal to 5. 0.25 t square equal to 5. So t square equal to 5 upon 0.25 equal to 500 upon 25. इसको सॉल्व करिए, that is equal to 20. So t equal to 20 under root 20, 2 into under root 5. So already you have got solution, because we have applied in this SB equal to 5 plus SA. ये इक्वेशन अगर आप you are using this condition, because B को 5 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करनी होगी कंपेयर टू ब्लॉक ए. B has to travel 5 meter more than block A. That condition we put here, and we have used simple equation S equal ut plus half a t square. Starting prior t equal 0 and initial velocity was 0. So putting starting 0, t equal u equal 0 and t it becomes 0. This one becomes 0. Only half a t square is counted. So solving this equation, easily you can find out t equal to 2 into root 5 second, and now you got answer. You see in equation in previous slide. See, this is a right answer. This is the right answer. T equal to 2 into root 5
and SB equal to SA plus 5. And you can also find out distance SA and SB, and you can see that SB will travel more compared to SA. So again you find distance traveled by both blocks. So let us check whether our equation is whether our answer is t equal to 2 into root 5 is correct or not. We have find answer t equal to 2 into root 5. So let us check it. So find out SA equal to ut plus 1 by 2 a into t square. So this is 0 into t plus half a 7.16 into root 20 का स्क्वायर, that is equal to 1 by 2 into 7.16 into 20, so 10 here, 71.6 meter. SA is traveling 71.6 meter. Now find out distance traveled by SB. SB equal to ut plus half at square a into b into t square. So this is equal to 0 into t plus 1 by 2 into AB 7.66 into 20, 10, solve it, 76.6. Now subtract it. SB minus SA equal to, you will find SB minus SA equal to 76.6 minus 71.6, you will find 5 meter. So SB equal to 5 plus SA. So because it is proving that SB equal to say 5 plus SA, so our answer that t equal to 2 into root 5 is absolutely correct, and option was this one. This is a correct answer, that t equal to 2 root 5 and SB equal to SA plus 5. This kind of equation, this level of equation you will find. अगर इस equation को हम एडवांस में कंसीडर करेंगे तो इट इज मॉडरेट टाइप क्वेश्चन, एंड इसको अगर हम मेंस में कंसीडर करते हैं तो इट इज टफ क्वेश्चन. इट विल बी कंसीडर्ड टफ क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर एंड यू विल फाइंड इजी, ऑलवेज इजी. इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है. नो प्रॉब्लम इन टू अंडरस्टैंड. इन दिस क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में यू विल नॉट फाइंड, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ मोशन, डायनेमिक क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स प्लस फ्रिक्शन प्लस इंक्लाइंड प्लेन. एंड यू विल सी दैट एवरी ईयर मेंस में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फ्रिक्शन एंड मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन जरूर पूछा जाता है. अगर ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन सडनली यू विल बी एबल टू सॉल्व one question or two questions based on friction and dynamics easily in mains examination. So next time we will come. मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन सो मनी थ्योरीज से है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, वेव नेचर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. If you feel it is good for you, please make a comment and share and subscribe. Thank you very much and have a nice day.